of occurring बड़ा probability of occurring exactly बड़ा probability of occurring बड़ा exactly बड़ा one event out of them is one event बड़ा out of them is given by is given by तो बड़ा ये देख उसका एक्सप्लेनेशन देख कैसे होगा you want to find but the probability of occurring but exactly but one event out of them इसका मतलब ये हुआ बड़ा कि सपोज A and B are the two events but of the sample space. So out of these two, suppose if A is the event which is occurring, B is the event which should not occur, or if B is the event which is occurring, so in that case A is the event which should not occur. दो इवेंट में से सिर्फ कोई एक इवेंट ही अकर होना चाहिए, दूसरा इवेंट अकर नहीं होना चाहिए, तो वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं एरिक? तो उसके अंदर दो फॉर्मूलाज है। उसके अंदर दो फॉर्मूलाज है। नंबर वन probability of A is equal to probability of A is equal to probability of A intersection B plus probability of A intersection B dash. Formula number 2 is probability of B is equal to probability of A intersection B plus probability of A dash intersection B. You will have to learn these two formulas. ये दोनों formulas तुम्हें learn करना है इसके लिए. And now first of all I will explain you the technique of remembering this formula. How you are going to learn this formula. तो सब लोग पहले नोट करो कि ये दोनों फॉर्मूलाज में कॉमन चीज क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट? जो दोनों में आने वाला ही है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन वाला पार्ट है ना वो ये लास्ट टर्म, ये बहुत ही हमें कंफ्यूज करेगा, हम लोग को सब में मिस्टेक करवाएगा, है कि नहीं? तो देख भाई उसका भी अपने पास टेक्निक है। फर्स्ट नंबर वन चेक करो कि तुम लोग जो फॉर्मूला पढ़ रहे हो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला तुम लोग किसका पढ़ रहे हो? यू आर स्टडिंग द फॉर्मूला फॉर ए, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अपना उसूल है कि हम लोग जिसका फॉर्मूला पढ़ते हैं ना जिसका फॉर्मूला, उसके साथ हम लोग कोई मस्ती नहीं करते, बट उसके साथ जो दूसरा जो टर्म है ना दूसरा टर्म, उसका हम लोग लेते हैं डैश। ध्यान से चेक कर हम लोग ए का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो मैंने ए के साथ कोई मस्ती नहीं किया है, बट ए के साथ कौन था? बी। तो बी का मैंने क्या ले लिया डैश। ये देख यहाँ पे
सेकेंड फॉर्मूला देख बेटा, सेकेंड फॉर्मूला हम लोग किसका पढ़ रहे थे बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का। तो बड़ा जरा ध्यान से चेक कर, मैंने लास्ट टर्म में बड़ा बी के साथ कोई मस्ती नहीं की है, बट बी के साथ कौन था बड़ा? ए। तो बड़ा मैंने ए का वहां पे क्या ले लिया? डैश। सबको समझा पड़ा ये फॉर्मूला कैसे लर्न करना है तुम लोग को? दोनों केस में बड़ा कॉमन टर्म इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो तो बड़ा आना ही आना है। बट जो कंफ्यूजन बड़ा लास्ट टर्म में था वो भी मैंने सॉल्व कर दिया बड़ा। जिसका फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसके साथ बड़ा कोई मस्ती नहीं करना है, बट उसके साथ जो दूसरा टर्म है बड़ा उसका तुम लोग क्या लोगे? डैश। चलो सबको समझ में आया? एंड नाउ देयर कम्स द एग्जांपल्स। एग्जांपल्स कि ये फॉर्मूला तुम्हें कब, कहाँ और कैसे बड़ा यूज करना है, ये देखो। तो फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ बड़ा पेट्रोल पंप। सब लोग बराबर ध्यान से सुनो बड़ा। देखो एग्जांपल इज बड़ा कि पर्सन stopping at a bada petrol pump and he will ask for a petrol. That probability is known bro. Person stopping at a petrol pump bro, and he will ask for a water bro. That probability is also known bro. Person stopping at a petrol pump bro, and he will ask for both. Both means bro, petrol as well as water bro. But that probability is also known. We want to find the probability in which a person will stop at a petrol pump and he will ask exactly beta one of them. Beta he will ask exactly one of them means क्या होगा तुम्हें पता चला? If the person will ask beta for the petrol, so beta he will not ask for the water. Vice versa beta. If the person will ask for the water, so beta he will not ask for the petrol. So this answer it can be obtained by using corollary number 2. It can be obtained by using the corollary number 2. Second example, it is a film which is getting an award. Film getting an award. है ना? A film gets an award for its music. But that probability is known. A film gets an award for its story. But that probability is also known. Film will get an award for both, that is for the music as well as for the story. But that probability is also known. And now the question is, find the probability in which the film gets an award in exactly one of them. Exactly one of them. But exactly one of them का मतलब क्या होगा? If the film gets an award for its music, but it will not get an award for its story. Or if the film gets an award but for its story, it will not get the award for its music. That answer but it can be known by using this corollary number 2. And third example is a person reading a newspaper. A person reading English newspaper, that probability is known. A person reading Hindi newspaper, that probability is also known. A person is reading the paper but in both the languages, both English as well as Hindi.
That probability is also known. So the question is, we want to find the probability in which the person reads the paper exactly only in one language. But exactly, but only in one language means if the person is reading the paper in English, but he will not read the paper in Hindi. Vice versa, if the person is reading the paper in Hindi, so he will not read the paper in English. That answer it can be known by using this second formula. So examples you can write down in short. First example is of petrol pump. Second example is with respect to film awards. Third example it is with respect to person reading. Person reading the newspaper. अब तुम लोग सब लोग ये सोच रहे होगे कि सर ये फॉर्मूला में ऐसा कौन सा टर्म है जिससे हम लोग को ये पता चल रहा है कि इफ द वन इवेंट इज अकरिंग तो अदर इवेंट इज नॉट अकरिंग. तुम लोग मुझे कोई बता सकते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला में ऐसा कौन सा टर्म है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वन इवेंट इज अकरिंग तो अदर इवेंट इज नॉट अकरिंग. पार्ट ये तू क्या बोल रहा है अभी तुम लोग क्या बोल रहे हो सब. अरे स्टॉप स्टॉप. बराबर है कुसुम राइट. दोनों फॉर्मूलाज के लास्ट टर्म्स चेक करो दोनों के. उससे तुम्हें पता चलेगा कि इफ वन इज अकरिंग तो अदर इज नॉट अकरिंग. देखो दोनों फॉर्मूला के लास्ट टर्म चेक करो. समझ में आया तुम लोग को चलो देखो जहां पे डैश है इसका मतलब वो इवेंट अकर नहीं हो रहा है. एंड नाउ at number 3 चलो राइट डाउन ए पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस,
SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। A, B and C are the three events. A, B and C are the three events of the sample space S. If A, B and C are the three events of the sample space S, then the probability of occurring either the event A or the event B or the event C is given by is given by is given by लिखा is given by probability of A union B union C probability of A union B union C is equal to probability of A plus probability of C minus probability of A intersection B minus the probability of B intersection C minus the probability of A intersection C plus it is the probability of A intersection B intersection C। बड़ा ये पूरे चैप्टर का सबसे छोटा फॉर्मूला है और सबसे बड़ा इजी फॉर्मूला है probability of A union B union C which is equal to P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of A intersection C plus P of A intersection B intersection C। बट ये फॉर्मूला जो है वो तुम्हें सिर्फ 3 इवेंट्स के लिए बड़ा यूज करना है। और आज का बड़ा असाइनमेंट, ये सारे फॉर्मूलाज बड़ा तुम्हें 3 टाइम्स लिखना है बड़ा। कितनी बार लिखेगा बड़ा ये फॉर्मूला? 3 टाइम्स बड़ा सारे फॉर्मूलाज।
कोई जीत नहीं करेगा और दो करके सैवियो। मैं पता है कि मुझे ज्यादा होमवर्क देना पसंद नहीं है। चलो नाउ नहीं, कितना भी जीत कर कितना भी रो नहीं दूंगा। नाउ आई विल स्टार्ट बड़ा विद द नेक्स्ट पार्ट। मैं स्क्रीन शेयरिंग बड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। नाउ बड़ा वी आर गोइंग टू स्टार्ट बड़ा विद some basic terminologies which is based upon the playing of cards। चार्ट तुम्हें बड़ा वहां पे दिख रहा होगा, तुम्हारे नोट्स में भी है बड़ा चार्ट। चलो मुझे सब लोग बड़ा आंसर दो। In a well shuffled pack there are how many cards? चलो फटाफट फटाफट बच्चा लोग आंसर दो। इन वेल शफल पैक। Yes, there are 52 playing cards। 52 playing cards, and this 52 playing cards, they are being divided they are being divided in two colors। They are being divided in two colors। Tell me, color, which color? Very good, bro. The two colors are red and black। The two colors are red and black। So here in this case, there are 26 cards which belongs to red, and there are 26 cards which belongs to black। Here you go, 26 cards of red and 26 cards of black. It makes a total. It makes a total. Here you go, 52 playing cards। चलो सबको समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है बेटा तुम लोग को? 26 cards of red and 26 cards of black bro. It makes total bro 52 playing cards। Further bro, each color bro, is further bro classified into two suits bro। Each color bro, it is further classified into suits bro। The name of the suits of reds are bro, hearts and diamonds। Whereas bro, the name of the suits bro, of black bro, they are clubs and spades। मैं क्या बोल रहा हूँ सबको समझ में आ रहा है? बराबर ध्यान से सुन लो बड़ो। फॉर रेड इट इज हार्ट्स एंड डायमंड्स, एंड फॉर ब्लैक इट इज क्लब्स एंड स्पेड्स। नीचे देखो मैंने वहां पे एक डायग्राम के साथ एक्सप्लेन किया है बड़ो। ईच सूट इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 13 कार्ड्स। ईच सूट it is comprising of
13 कार्ड्स उड़े, 13 cards of hearts, 13 cards of bada diamonds, which makes bada 26 cards of red, 13 cards of clubs, 13 cards of bada spades, which makes 26 cards of black, and 26 cards of red plus bada 26 cards of black. It makes total 52 playing cards. मैं क्या बोला बच्चा लोग, समझा सब लोग को? It makes बड़ा 52 बड़ा प्लेइंग कार्ड्स। और पढ़ाने के टाइम बड़ा मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें सम सॉल्व करने के टाइम बड़ा वो ही ध्यान रखना है बड़ा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोग को? सम सॉल्व करने के टाइम मुझे हर कोई स्टूडेंट हार्ट्स, डायमंड्स, क्लब्स, स्पेड्स यही सब भाषा बोलता हुआ दिखना चाहिए। मतलब सम सॉल्व करते करते किसी ने बड़ा अपनी लोकल भाषा बड़ा यूज की, ए मने चरकट आई, ए मने काड़ी आई, ए मने फुल्ली आई। मतलब ऐसा कोई भाषा यूज किया तुम लोग ने? बड़ा लाई काली ईट, मतलब उधर का उधर ही फोन में घुस के मारूंगा तुम लोग को सबको। क्या बोलना है बड़ा सब लोग को? हेड्स, डायमंड्स, क्लब्स, पेज, समझा रहे सबको? कोई भी बड़ा आजू बाजू वाला अगर तुम लोग को बड़ा देखे तो सब लोग को भाई ऐसा लगना चाहिए इंटरनेशनल गैम्बलर्स आए यहाँ पे। समझा साबियो? मार कपे तो हाँ चलो डीजल पार्टी करते करते बड़े जब ऐसे कार्ड्स खेल तो कोई अपने वहां पे लोकल भाषा यूज नहीं करनी है। देविना पाटिल चलो नेक्स्ट। હમણાં છે ને બડા સવિયો સાતમ આઠમ આવશે જો હમણાં તો રાતના પત્તા રમવા ટાઈમે આજ બોલજે બધાને હાર્ટ્સ, ડાયમંડ્સ, ક્લબ્સ, સ્પેડ્સ। મમ્મી પપ્પાને પણ લાગવું જોઈએ કે આ શું શું બોલે તમારો સવિયો? અબે चलो नेक्स्ट बड़ा, अब आगे प्रोसीड करते हैं आगे। बड़ा यहाँ पे 52 प्लेइंग कार्ड्स में बड़ा स्पेशल कार्ड्स होते हैं बड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं बड़ा फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स बड़ा, फेस कार्ड्स, द कार्ड्स बड़ा which belongs to king, queen and jack बड़ा। The cards बड़ा which belongs to king, queen and jack बड़ा, they are being called to be as बड़ा face cards बड़ा। Urf, they are being called to be as बड़ा picture cards। What they are being called to be as? Picture cards बड़ा। जैक समझ में आता है बड़ा? जैक, गुल्लू, गुलाम, उसको बोलते हैं बड़ा हम लोग जैक बड़ा।
total number of beta face cards are 12, which belongs to 4 kings, 4 queens, and 4 jacks. Each suit it is comprising of 3 face cards and 52 playing cards, जिसको तुम लोग सब लोग बड़ा अपना माई बाप मानते हो, जिसको तुम लोग बड़ा सबसे बड़ा कार्ड मानते हो, इक्का। है ना? तो तुम्हारा माई बाप है ना, बड़ा माई बाप एकदम। है ना? That is called to be as the card of age। भले ही बड़ा ये सबसे बड़ा कार्ड हो, पर उसको हम लोग कभी भी बड़ा फेस कार्ड या तो